हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जापानीज भी इंसेफेलाइटिस वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस की जो फैमिली है उसे कहते हैं फ्लेविवायरिडी। जेनस है फ्लेविवायरस। इट इज रिलेटेड टू डेंगू, येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस, सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस वायरस। मॉर्फोलॉजी की बात करें जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस की, साइज 40 टू 50 नैनोमीटर होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, पॉजिटिव सेंस, एनवेलप्ड प्रेजेंट, आइकोसाइड्रल कैप्सिड, लीनियर एज वेल एज नॉन सेगमेंटेड जीनोम प्रेजेंट रहता है। लाइफ साइकिल। होस्ट, रिजर्वायर होस्ट हमारा होगा बर्ड। एम्पलीफायर होस्ट जहां पे एम्पलीफाई करेगा वो होगा पिग्स। इंसिडेंटल होस्ट हॉर्सेस एज वेल एज ह्यूमन। वेक्टर, क्यूलेक्स ट्रिटियानियो रिंकस। इंक्यूबेशन पीरियड 5 टू 15 डेज। देखो बर्ड, इनिशियली बर्ड से मॉस्किटो पे, बर्ड को बाइट किया मॉस्किटो ने, मॉस्किटो पे आया वायरस। अब मॉस्किटो को पिग, मॉस्किटो से जाएगा ये पिग में। अब ये पिग से वापस मॉस्किटो में, मॉस्किटो से फिर ह्यूमन में, ह्यूमन में जाएगा तो इंसेफेलाइटिस वायरस कॉज करेगा। मॉस्किटो फिर बर्ड में, ये इसका जो चेन है वो चलता ही रहता है। बर्ड से मॉस्किटो में जाता है, मॉस्किटो से पिग में, पिग से वापस मॉस्किटो में, मॉस्किटो से फिर ह्यूमन में, ह्यूमन से कॉजेज ह्यूमन के अंदर ही जब जाता है तो इंसेफेलाइटिस कॉज करता है। Pathogenesis. Japanese encephalitis virus cannot be transmitted directly from person to person. Cannot be transmitted directly from person to person. First step is infected Culex tetaniorhynchus bites incidental host, that is human. The mosquito bites the human, then virus get in capillary circulation, and this condition known as initial viremia. After that, it get attaches to endothelial cells of capillaries, monocytes, macrophages by reticuloendothelial system. First replication occur in endothelial cell and reticuloendothelial cells. Secondary causes secondary viremia. Now after secondary viremia, virus infect brain by infecting small blood vessels of brain or choroid plexus. Now inflammation of brain will occur, as a result encephalitis. Now clinical manifestation. Most humans are asymptomatic. Most humans are asymptomatic means signs and symptoms are not seen. Only less than 1% of people infected from Japanese encephalitis virus developed clinical disease, out of which 30% dies. During secondary viremia, fever, headache, rashes, and vomiting occurs. Encephalitis stage: high fever, convulsion, coma, nuchal rigidity. Lab diagnosis of encephalitis virus. Sample collection from blood, CSF. Second step is culture. Culture is done in hamster kidney cells as well as HeLa cells or Varro cells. Third step, animal inoculation intracerebrally in suckling mice. Serology. Paired sample of serum shows rising titer of hemagglutinating and neutralizing antibody. Typical CSF picture: slightly elevated protein level, normal glucose level, non-specific leukocytosis with a predominance of lymphocyte. These are the typical CSF pictures. Detection of IgM antibody against Japanese encephalitis virus by IgM capture ELISA in CSF, cerebrospinal fluid. Amplification of Japanese encephalitis virus nucleic acid from CSF or brain tissue by PCR. Control and prevention. Control: mosquito abatement programs are the regular use of mosquito nets. These are the control. Now prevention: killed mouse brain vaccine, 2 dose 1 milliliter each at interval of 7 to 14 days, booster dose of 1 milliliter after few months. So prevention first step is killed mouse brain vaccine is administered 2 dose 1 milliliter each at an interval of 7 to 14 days, and booster dose is given 1 milliliter after few months. Killed chick embryo vaccine, which is very effective. Now the complication of Japanese encephalitis virus. The complications are paralysis, seizures, coma as well as death. Organism causing encephalitis are Japanese encephalitis virus, rabies virus, herpes virus, arbovirus, West Nile virus. That's all about the Japanese encephalitis virus. Thank you.